Welcome students to the second part of the second lesson, Federalism. In the first part, we have learned the difference between the unitary government and the federal form of government, the features of federalism, difference between the coming together and holding together federation with the example, dual objectives of federal form of government. Moving into the next topic, India as a federal country. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after the independence, so many princely states also joined with the Indian Union. What is the meaning of princely state? Princely state means states which are ruled by prince, kings, nawabs, etc. Number of princely states were there. There are about 565 princely states. Right? And Constitution declared India as the Union of States. Union of States. But it never indicates, it has the word federation never indicates. But the Union of India that follow the principle of federalism. Totally follow the principle of federalism. And the constitution originally provided a two-tier system, two-tier government system. That is, already you have learned also. One is the central or the union government, central government or the union government. Second is the regional or the state government. In India we call it as state government. Okay, this is the originally they divided these two sections. That is the central government as well as the state government. A third tier federalism was also added later in the form of municipalities and panchayats. This we will learn in the last session of this chapter in detail. Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between this central or union government and the state government. Constitution में लिखे रखा है कि किस किस का पावर क्या क्या है करके. Threefold distribution है. This contains three lists. This you have to listen carefully. There are three lists mainly. One is the union list. Union list means includes the subject of national importance like defense, foreign affairs, banking, communication, currency, etc. नेशनल इंटरेस्ट का जो भी होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, वो सारे दिस आपका यूनियन लिस्ट में आता है. वाई इट विल नॉट गिव टू द स्टेट. अच्छा, लेट मी आस्क एन एग्जाम्पल टू यू. सपोज प्रोडक्शन ऑफ करेंसी, आपको पता है आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करेंसी एंड ऑल. सपोज एक करेंसी का ड्यूटी अगर कोई स्टेट को दिया जाएगा तो क्या होगा? अब आप बोलेंगे क्या होगा? वो स्टेट तो रिच हो जाएंगे. हाँ, स्टेट अपने अपना क्या बोलेंगे उन्नति चाहता है. तो द सेम वे दे विल प्रोड्यूस themselves. जब उसका खत्म हो जाएगा तो वो प्रोड्यूस करेंगे. ये हो सकता है. द सेम वे थिंक अबाउट दैट द एंटायर डिफेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज गिवन टू उत्तरांचल. उत्तरांचल को दिया, तुम देखो पूरा इंडिया का सब कुछ. सोचो साउथ से अगर कोई अटैक किया है क्या होगा? उत्तरांचल बोलेंगे साउथ में देखो, साउथ इंडिया को तुम लोग देखो, हमारे को यहाँ से आने में दिक्कत है. सो इस तरह कंडीशन. सेम आस इन फॉरेन अफेयर्स. सपोज हिमाचल प्रदेश को दे दिया फॉरेन अफेयर्स, व्हाट विल हैपन? ऑल द बिजनेस विल गो टू हिमाचल प्रदेश. अदर ऑल स्टेट दे विल wait for the chance, but Himachal Pradesh will utilize all the facilities. So national interest, पूरे कंट्री का इंटरेस्ट का जो भी बात होता है, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सारी बातें यूनियन लिस्ट में आता है. राइट? ध्यान रखना आपको लिस्ट कौन कौन से करके. सो बोलेंगे यूनियन लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस.
लाइक एग्जाम्पल एक दो याद रखने ना, एक दो नहीं, बुक में जो है वो याद रखना, बिकॉज एक बार ऐसा पूछा था कि सो एंड सो लिस्ट इंक्लूड्स इन विच दिस सब्जेक्ट, सो एंड सो सब्जेक्ट इंक्लूड इन विच लिस्ट, 1 मार्क में पूछा था। तो आपको पता नहीं चाहिए, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और आपका क्या बोले बैंकिंग हो गया, है ना, ये सब कुछ आपका करेंसी हो गया, सब कुछ यूनियन लिस्ट में आते हैं। एंड रिगार्डिंग दिस the laws will prepared by the union government. That means the union government can make the laws regarding these subjects. इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लॉ बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को। समझ आ गया आपको? 3 मार्क क्वेश्चन है, इतना आपको लिखना है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। यूनियन लिस्ट that is that include the subject of national importance such as defense, currency, etc. फिर बोलेंगे the union government will take the decision regarding this or will make the laws regarding this. Why they are doing so? Because a uniformity होना चाहिए, a uniform policies on these matters throughout the country. पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी होना है, किसी स्टेट में ज्यादा कम ऐसा कुछ नहीं है, टोटल पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मिटी के लिए और आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए इस तरह किया है। आप ये लिखेंगे इसमें, राइट? I hope you understood union list. Second is state list. State list, it contains the subject of state and local matters, local importance. मतलब स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस जो भी हो उसका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी होता है उसी सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल पुलिस, कॉमर्स, ट्रेड, रोड ना, ये सब कुछ होता है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी बातें द स्टेट लिस्ट में आते हैं, राइट? स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉज रिगार्डिंग दीज सब्जेक्ट्स। इरिगेशन के ऊपर क्या बोलेंगे उसका, ट्रेड के ऊपर, पुलिस के ऊपर, हर स्टेट का अपना पुलिस होता है, तो दे कैन मेक देयर ओन लॉस, राइट? सो आप बोलेंगे द स्टेट लिस्ट इट कंटेन्स द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेट एंड लोकल मैटर इंपॉर्टेंस लाइक पुलिस एंड ऑल द थिंग्स आप बोलेंगे, ठीक है? एंड द लॉ कैन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली रिगार्डिंग दिस। एंड द थर्ड वन, concurrent list, CONCURRENT, concurrent list, and this includes the subject of common interest. दोनों को इसका अधिकार होता है। एग्जाम्पल, आपको पता है कि यूपी गवर्नमेंट का यूपी बोर्ड होता है एजुकेशन में, यूपी बोर्ड स्कूल्स होता है, यूपी बोर्ड सिलेबस होता है। सेम हिमाचल प्रदेश का एसपी बोर्ड होता है ना, पंजाब का अपना बोर्ड होता है, हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन होता है एजुकेशन में। सेम आसरी सेंट्रल का भी होता है, सीबीएसई। तो स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोथ आर फॉलोइंग दिस एजुकेशन का मतलब जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। सो इसमें सेंटर का भी इंटरेस्ट है, स्टेट का भी इंटरेस्ट है एजुकेशन में। इस तरह जो मैटर होता है ना एजुकेशन, इस तरह मैटर कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो बोलेंगे कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ टू बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों को इंटरेस्ट जो होता है उसी सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में बोलेंगे। एग्जाम्पल आप ये बोलेंगे कौन सी है, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस ना, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। आपको बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, वो सारे एग्जाम्पल एक बार रीड कर लेना। दीज आर कंकरेंट। तो नेशनल इंपॉर्टेंस वाला यूनियन लिस्ट, स्टेट का जो लोकल इंपॉर्टेंस वाला सब कुछ स्टेट लिस्ट, दोनों को जो इंटरेस्ट होता है उसको बोलेंगे कंकरेंट लिस्ट। अब इसका लॉ स्टेट भी बना सकता है, सेंट्रल भी बना सकता है, ठीक है, दोनों बना सकते हैं। बट इफ देयर लॉस कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर, सपोज दोनों का लॉ स्टेट भी बना दिया, सेंट्रल भी बना दिया, इफ देयर लॉस कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मोर प्रिवेल और मोर इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया? मतलब दोनों ने लॉ बना दिया लेकिन उस लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लड़ाई मतलब दोनों में क्लैशेस हो गया, उस कंडीशन में किसका लॉ चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, राइट? थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स में 3 लिस्ट होता है, कौन कौन सी है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, राइट? एंड वन मोर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना है। मतलब देखो कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1950 में, इजंट इट? इम्प्लीमेंट हुआ था, और उसके बाद कितना साल हो गया?
उसके बाद जो चेंजेस आते रहते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक और सेक्शन बना के रखा है, और बाद में जो भी आएगा वो सब इसी में डाल दो। उसका नाम है रेसिड्यूअरी लिस्ट। रेसिड्यूअरी लिस्ट अब बुक में एग्जाम्पल हमारा जो रिसेंटली 19 राजीव गांधी लेके आया था, वो आपका कौन सी है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारा कंप्यूटर, इंटरनेट एंड ऑल थिंग्स, है ना। राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम वो रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन लेके आया। सो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कितना साल बाद आया है। इस तरह जो भी आता है ना, बाद में जो आता है वो सब आपका रेसिड्यूअरी लिस्ट में आएगा, रेसिड्यूअरी लिस्ट। सो आपको मन में रखना है यूनियन, स्टेट, कंकरेंट एंड रेसिड्यूअरी। रेसिड्यूअरी का जो लॉ बनाने के अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। आप बोलेंगे यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक द लॉस फॉर द रेसिड्यूअरी लिस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। पढ़ाना तो पड़ेगा, बुक में है, इसलिए ना न्यू बुक में है कि नहीं मुझे पता नहीं, न्यू बुक्स मैंने देखा नहीं, पुराने बुक के अकॉर्डिंग में पढ़ाता हूँ। स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको अभी ये वैलिड नहीं है, राइट। स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर को नहीं हटा दिया, यू नो वेल, है अबाउट आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 का कहानी पता है ना, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 370 कौन कौन कैसे किया पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 70 पीछे कहानी है। जब स्कूल खुलेगा ना तब मैं बताऊंगा कहानी, थोड़ा बताता हूँ। राजा हरी सिंह था इंडिपेंडेंस के टाइम। जम्मू एंड कश्मीर जो किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राजा हरी सिंह, ही वॉज नॉट विलिंग टू जॉइन विद इंडियन यूनियन, नीदर ही वांटेड टू जॉइन विद पाकिस्तान, बिकॉज ब्रिटिश लोगों ने बोला कि तुम्हारा मर्जी है, तो अपना कंट्री बन सकता है, अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है, चाहे पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। राजा हरी सिंह तो बहुत थोड़ा सा टेढ़ा इंसान था, उन्होंने बोला कि ना मैं हिंदुस्तान के साथ ना मैं पाकिस्तान के साथ, मैं अपना हम होमोजीनियस बनना चाहता हूँ। होमोजीनियस, व्हाट इज होमोजीनियस? यू माइट हैव लर्न इन 9th क्लास केमिस्ट्री, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, है ना, याद है आपको? यस। सो बोलेंगे हम अपने कल्चर के साथ खुश हैं, वी आर नॉट अलाउइंग, यू डोंट वांट एनी अनदर कल्चर, हमें कोई और अनदर कल्चर नहीं चाहिए, हमें एक ही कल्चर, कश्मीरी कल्चर हमें चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो अकेले अपना कंट्री बनाने के लिए मतलब सोचा है, बहुत कोशिश की हमारा जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल जी वगैरह। इवन सरदार पटेल ने बोला कि हम फोर्स यूज करेंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट रेडी टू यूज फोर्स एंड ऑल थिंग्स। लास्ट में हालात ऐसे लेके आया, हालात क्या मैं बाद में बताएंगे, लेके आया राजा हरी सिंह को हमारा हेल्प लेना पड़ा है। हेल्प करने के लिए नेहरू जी निकल पड़ा था, बट सर पटेल जी ने बोला कि नहीं हेल्प नहीं करना, अभी रुको मैं उससे बात करता हूँ। बोला कि हम हेल्प करेंगे लेकिन हमारी बात मानना, यू शुड बी विद अस, तुम हमारे साथ मिलो। तो राजा हरी सिंह की कम नहीं था, बोला ठीक है मैं आपके साथ मिलेंगे, क्योंकि राजा हरी सिंह को हमारा आर्मी का जरूरत है, पाकिस्तान अटैक कर रहा है, ज़रूरत है, हम तुम्हारा साथ मिलेंगे, बट एक प्रॉब्लम है, एक समझौता करना है। क्या समझौता? वो है आर्टिकल 370, बट दैट इज एलिमिनेटेड, टोटली एलिमिनेटेड। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर इज गेटिंग सम प्रोविजंस। क्या प्रोविजन है? नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर कैन परचेज ए लैंड और हाउस इन दैट स्टेट, नॉट नाउ, अभी की बात नहीं बोल रहा हूँ, अब मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया, आपको पता है मोदी सरकार इस बार आर्टिकल 370 एलिमिनेट कर दिया था, यू नो वेल, पहले की बात बोल रहा हूँ। वी आर नॉट अलाउड टू परचेज, वी कैन स्टे देयर, बट वी आर अनेबल टू परचेज अ सिंगल पीस ऑफ लैंड और हाउस इन दैट स्टेट। And many provisions of Indian Constitution is not at all applicable there. If you want to apply, you need the consent of the state assembly. Suppose हमारा पार्लियामेंट में हम कोई डिसीजन लिया पूरे स्टेट में एक साथ इम्प्लीमेंट करने का, एग्जाम्पल अभी का बताता हूँ, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया अभी जो क्या बोलेंगे इसका, हमारा लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया। जब तक स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, जो लॉकडाउन वाला कहानी है ना, पूरे बाकी सारे स्टेट में चलेगा, बट उनका स्टेट में नहीं चलेगा, ऐसा कंडीशन था। लेकिन अब चेंज हो गया, अब तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। एंड दिस वाज द क्या बोले आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी ऑल्सो, एलिमिनेशन ऑफ आर्टिकल 370 उन्होंने करके दिखा दिया।
एनीवे दैट इज नॉट आवर टॉपिक। और टॉपिक इज दैट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो बुक में दे रखा है स्पेशल स्टेटस के बारे में, बट हमारे को वो सही से पढ़ना नहीं है, मैं आपको जस्ट बता दिया। अब उल्टा हो गया, जो बुक में लिखा है उसका उल्टा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सम मोर स्टेट आल्सो गेटिंग द स्पेशल प्रोविजंस लाइक सेवन सिस्टर्स, आसाम, मेघालय एंड ऑल। वहाँ पर मिलना ही चाहिए बिकॉज द टोपोग्राफी एंड ऑल थिंग्स, वहाँ का एरिया अंडुलेटिंग प्लेन्स है, आपका माउंटेन्स है, और फ्लड्स आता है, रिवर्स है, रोड्स नहीं है, ये सब की वजह से वहाँ पर जो प्रोविजन दे रखा है दैट शुड बी देयर, ठीक है। प्लेन तो है नहीं, इस वजह से उसको जो मिल रहा है मिलने दो, इस तरह कुछ प्रोविजन दे रखा है। इसके अलावा कुछ और जगह है, दैट इज उसको बोलेंगे यूनियन टेरिटरीज। क्या यूनियन टेरिटरीज? देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, कम पावर है उसमें। क्यों पता है? दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। छोटा है इसलिए इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं कर सकता, और इतना छोटा भी नहीं है किसी और स्टेट के जोड़ सकता है। अंडरस्टूड? मतलब इन इंडिया सम एरियाज आर देयर, इट इज टू स्मॉल टू जॉइन, सॉरी टू स्मॉल टू डिक्लेयर एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एंड छोटा है इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं कर सकता, एंड नॉट सो स्मॉल टू जॉइन विद अनदर स्टेट। अब आप बोलेंगे सर छोटा तो है, अगर स्टेट नहीं कर सकता तो किसी का जोड़ो, ये भी नहीं कर सकते, इतना छोटा भी नहीं है। अंडरस्टूड? एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए छोटा है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए छोटा है, ज्वाइन भी नहीं कर सकता किसी और स्टेट के साथ है, थोड़ा एरिया ज्यादा है। सच एरियाज आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है ना? आपको पता है कौन कौन सी है कि लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है ना, डामन डीयू है ना, नंबर ऑफ है आपके पास। इसको स्पेशल पावर्स, इसका रूलिंग है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में, इसका रूलिंग, ठीक है। इवन आपको दिल्ली इज ऑल्सो वैसे यूनियन टेरिटरी, लेकिन आप तो स्टेट का पूरा दर्जा नहीं दिया है, स्टेट घोषित किया तो गया है, लेकिन पूरा कंप्लीट जो आपका पोजीशन दिया नहीं है, isn't it? So you can say that these territories do not have the powers of a state, and the central government has special powers in ruling these areas. So पूछेंगे what do you mean by union territories? तो आप बोलेंगे in these areas which are too small to declare as an independent state, but which could not be merged with any of the states, right? Such area is known as what? आपका यूनियन टेरिटरीज, राइट। नाउ अगला टॉपिक है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। आपको ये पता है ए पार्लियामेंट अलोन कैन नॉट चेंज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, अभी बोला था यूनियन लिस्ट, ये सारे, अगर इसमें कुछ चेंजेस चाहिए यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज यूनिलैटरली, नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, isn't it? Parliament alone cannot change the decision of the constitution. Any change you need, it has to be first passed in both the parliaments. पार्लियामेंट के टू हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों पे पास कराना है। देन क्या करेंगे? half of the Indian states should support, then only they can change the provision of the constitution. Understood? If the central government or any government, central government wanted to change the provision which are given in the constitution, they need the support of the two houses of parliament as well as half of the states, more than half states should support, then they can change, otherwise they cannot be changed, right? And in case of any dispute regarding the division of powers, the high court and supreme court act as an umpire. ये तो हमने पहले बोल चुका था। अगर पावर शेयरिंग में अगर कोई भी अगर डिस्प्यूट आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अगर सॉरी आ गया, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज एन अंपायर, isn't it? और दे विल मेक द डिसीजन आल्सो। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्सेस, मतलब टैक्स वगैरह बढ़ा सकता है, कम कर सकते हैं, सबको अथॉरिटी स्टेट और दोनों के लिए हाथ में है, ठीक है। और गवर्न करने के लिए, अच्छी तरह से गवर्न करने के लिए दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टैक्सेस, राइट, मतलब रेवेन्यू के इंक्रीज और डिक्रीज ये कर सकते हैं। इतना पोर्शन आज
आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू. So now board explanation. Uh, India as a federal country, second topic of Federalism chapter 2. See, we discussed about India's independent and bloody partition, painful and bloody partition, etc. And afterwards, the constitution decided it's a uh, union of the state. But though they never use the word federation, but they follow the federation, they follow the principles of federalism, right? Initially, the constitution provides two-tier system power arrangement, two-tier system of power arrangement. That is, one is known as the central or union government, central government or union government, and another is the state government. Afterwards, third tier is also added, that is municipalities and panchayats, right? This also I discussed. And for this, the constitution provides a threefold power arrangement, legislative powers, threefold power arrangements they initiated in the constitution, and this contains three lists. What are they? One is the union list. What is union list? The subject which always having the importance of the national interest. That means the subject, जो भी सब्जेक्ट होता है जो नेशनल इंटरेस्ट का होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वो यूनियन लिस्ट में आता है. एग्जाम्पल अपना डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, एक्सेट्रा, राइट? These are the union list. And regarding why this central government is taking the responsibility of these powers, that also I discussed, because the uniformity, isn't it? यूनिफॉर्मिटी शुड थ्रू आउट द कंट्री, पूरा कंट्री में यूनिफॉर्मिटी के लिए ये सारे इनके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, राइट? एंड द स्टेट लिस्ट मीन्स दैट इज द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट करेंगे, उनका लोकल इंपॉर्टेंस वाला जो भी पावर होता है, जो भी सब्जेक्ट्स होता है, वो सब उसमें आता है. सब्जेक्ट्स इंक्लूड द लोकल इंपॉर्टेंस लाइक पुलिस, इरिगेशन और एग्रीकल्चर, ना ट्रेड, कॉमर्स, एक्सेट्रा आर अंडर दिस स्टेट लिस्ट. And the third one is the concurrent list. In this, the subject which having the interest of both section, means central government as well as state government having the interest in these subjects. कोई भी सब्जेक्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट होता है उसी को बोलेंगे, उस concurrent list में आता है. Example, I told you about the education. We are having the UP board, state board, as well as the central board, CBSE. So both are under this education system. So this type of things will under concurrent list, right? Interest of both. Example, marriage, education, succession, adoption, etc. Many things are there. And one more list is there, that is residuary list. What are residuary list? Suppose we will ask the question, what are residuary list? Residuary list. We have to say that the list, the subject which added after the constitution is known as residuary list. And this example IT, the power of making laws regarding this list under the control of central government, right? Residuary list का law बनाएंगे central government. One thing I forgot to inform you, the concurrent list. And the subjects under the concurrent list, the law, the state as well as the central can make the laws. But if the laws conflict with each other, 100% the law made by the central is more valid. Understood? The law made by the central is more valid, and under this concurrent list. Also, then we talk about the special provisions of the states. Especially we talk about Jammu and Kashmir. Earlier, Jammu and Kashmir is having some provisions, special provisions. Not a single Indian citizen has a right to purchase the land or house in Jammu and Kashmir. Story also I told you regarding the housing and all the things, isn't it? So, but that situation changed. Now the Article 370, which has given the authority to Jammu and Kashmir, Government of India, many provisions are not applicable to Jammu and Kashmir. If you want to apply that, then they need the consent of the state assembly. Jammu and Kashmir का assembly का support चाहिए, तब जाकर के हम अपने laws implement कर सकता था. वो अभी change हो गया, Article 370 eliminate हो गया. So there is no scope of the special provision of the J&K, right? Anyway, I told you because that is inside the textbook. That is why I given the narration about this. And seven sisters, some states so also getting some provisions.
than the other state, because some states are having unlimited plains, not plains, mountains, forests, and floods also. Roads are unable to make, valleys, etc. That is where they are getting some provisions that should be there. Example, seven sisters, Meghalaya, Assam, Manipur, like that. And अगला है status of union territories. Some union territories are there. Why they called union territories? Because that is to not so small to join with a state, another state, too small not to declare as a state. समझ आ गया? इतना छोटा है और स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकता, इतना छोटा भी नहीं है किसी और स्टेट के साथ ज्वाइन भी कर सकता है, ठीक है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज. एग्जांपल आपको मैंने बोला था, चंडीगढ़ बोल दिया, डामन, लक्षद्वीप, दीव, एक्सेट्रा. And power of courts का बता दिया, because power share arrangement is written by contained in the constitution. If any problem arise between this central and state, high court and supreme court can interfere and they can take the decision also, right? उसके बारे में बता दिया. और unilaterally central government cannot pass any laws regarding the constitutional power arrangement. वर्ष में जो लिखे रखा है उसका पावर अरेंजमेंट में, इसमें अगर कोई भी चेंजेस चाहिए, अकेले जब पार्लियामेंट पास नहीं कर सकता, पास करने के लिए क्या चाहिए उसको, दे नीड द कंसेंट ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मींस राज्यसभा और लोकसभा दोनों का पावर चाहिए, टू-थर्ड मेजॉरिटी चाहिए, एज वेल एज दे नीड द कंसेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री. हमारा कंट्री में कितना स्टेट है उसका हाफ से ज्यादा स्टेट का सपोर्ट भी चाहिए और सपोर्ट ऑफ टू-थर्ड मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस, देन ओनली दे कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट? और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कोर्ट कैन इंटरफियर एंड दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. दिस मच ऑफ थिंग्स यू हैव टू रिवाइज एंड आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? थैंक यू.